मिलॉर्ड, द केस रिलेट्स टू इलेक्ट्रोक्यूशन डेथ। ठीक है, आप बिजली विभाग के लिए हैं? माय लॉर्ड, कितने का है? 6,78,000। 6 लाख का है, तो क्या है ग्राउंड आपका? मिलॉर्ड, एक सिंगल ग्राउंड है। इफ दैट कन्विंसेस माय लॉर्ड, देन आई विन द केस, अदरवाइज नॉट। मिलॉर्ड, इट्स कॉमन फैक्ट, इट कैन जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन कि जो भी ऊपर से जो तार जो जाते हैं वो सारे ओपन रहते हैं। नोबडी इज एक्सपेक्टेड टू क्लाइंब एंड टच देम। अगर कोई उसको क्लाइंब करके अगर टच करता है, उसकी डेथ होती है, तो उसमें हमारी कहाँ गलती है? कहाँ पे इसमें उनका तो केस यही है क्या? इनके जो डेथ हुआ है, वो व्यक्ति किसी के यहाँ पे मजदूरी करके सेंटरिंग से जो छत के लिए जो छड़ बना, उसके लिए वहां पे चढ़ा हुआ था, और उसकी वजह से उसके ऊपर जो 114 केवी का जो तार था, ही केम इन कांटेक्ट विद दैट। नहीं तो आपको तो प्रॉपर, अगर रेजिडेंशियल एरिया से जा रहा है तो आपको तो प्रॉपर कवर करके रखना चाहिए ना, आप नहीं, ओपन जो कैसे जो in case of finding of the limit code below your lordship, जो ऊपर से जो खंभे से खंभे जो तार जो जाते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल एरिया हो चाहे कोई भी एरिया हो, वो इंसुलेटेड कहाँ रहता है? नहीं, ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि उनको इंसुलेटेड रखना है। माय लॉर्ड में कंसीडर नहीं नहीं है, वो जजमेंट है, अब हमको पता नहीं कौन सा डायरेक्शन भी है हाई कोर्ट का, डिवीजन बेंच का है जी, कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हैज टू कीप दोस हाई टेंशन वायर इंसुलेटेड। a judgment which I have not gone through or which my department has not challenged, I will not comment upon it. But from my own understanding, what I will say is, my lord, कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन है, देखिए, आप जब तिफरा पुल से जाएंगे ना, आप my lord, तिफरा पुल के ऊपर में हाई टेंशन वायर है, आपने ध्यान दिया होगा। सर उस केस में मैं ही खड़ा हुआ था, उसमें एक्चुअली हुआ क्या था नहीं नहीं नहीं, आप गए हैं ना? हाँ मैं गया, वो इंसुलेटेड है कि नहीं है? आई एम टेलिंग द स्टोरी अबाउट इट। उसको पहले जो वो रावण टाइप का चौड़ा होता है वो बनना था, तो उसकी जो हाइट है वो कम होती है। तो जिनका लैंड से हम उसको एक्वायर कर रहे थे, दे केम बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। अब वो कोविड का टाइम था और उसको हमको जल्दी कंस्ट्रक्ट करना था, तो वी केम विथ अ प्रपोजल कि हम वो सिंगल हाइटेड पोल वाला जो इंसुलेटेड रहेगा हम वो डालेंगे। दैट इज एन एक्सेप्शनल नहीं सर्कमस्टेंस। तो हो गया वैसे ही, आप भाई रेजिडेंशियल एरिया में जा रहा है तो यू शुड हैव टेकन केयर। मतलब my submission is कि the transmission of electricity involves more of a science than of law. डेथ हुई है किसी की, दे दीजिए, काहे? My lord, में reserve the judgment और पास है। नहीं, अब भी करते हैं, वो रिजर्व वाला तो काम ही नहीं करते हम तुरंत। इशू नंबर 1 एक बार मैं पढ़ दूं फॉर माय सेल्फ। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। ऐसा है कि हमारा डिपार्टमेंट, जैसे आपने 1-2 केसेस में ऑर्डर किया है, तो एक्स ग्रेशिया में भी 4 तक के तो देते ही हैं। तो इंटरेस्ट मामले में पैरा 8 ऑफ द जजमेंट, मामले में वादी दयाराम साहू ने अपने साक्ष्य में यह बताया है कि दूरदेशी उर्फ राजेश का पुत्र था। वह सेंटरिंग का कार्य करता था तथा कुशल कारीगर था। वह तीजराम के साथ कार्य कर 200 रुपए प्रतिदिन प्राप्त करता था। इस साक्षी के अनुसार राजेश व तीजराम दोनों संतोष यादव ठेकेदार के पास काम करते थे। ठेकेदार के पास काम करते हुए रामाधार साहू निवासी नयापारा वाले का मकान बना रहे थे। उसके मकान के ऊपर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के द्वारा 114 केवी हाई टेंशन तार गया हुआ था। वह तार ढीला हो जाने के कारण झुलस गया था, वह नीचे लटक रहा था, जिसकी शिकायत मकान मालिक द्वारा तथा ग्राम पंचायत और अन्य ग्रामीणों द्वारा कई बार विद्युत मंडल के कार्यालय में कर्मचारियों एवं अधिकारियों को किया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस तार को न तो सीधा किया गया, न ही उठाया गया, वह झुका हुआ नीचे पड़ा हुआ था। दिनांक 29/12/17 को सेंटरिंग करते समय राजेश साहू झुकी हुई तार के चपेट में आ गया और उसे विद्युत तार खींच लिया, जिससे वह गंभीर रूप से जलकर घायल होकर नीचे गिर गया। बिजली तार से करंट लगने से एवं जलने से उसकी मौत हो गई। इस साक्षी के अनुसार विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटित हुई। सो माय कंटेंशन इज कि पब्लिक देख रही है, तार झुलस रहा है, गिरा हुआ है, उसके बाद भी उसी के नीचे ये तो काम आपको तो कंप्लेंट किए थे, आपने उसको ठीक क्यों नहीं किया? मतलब है उसमें जो कंप्लेंट वगैरह उनको एग्जिबिट किए हैं? नहीं, उन्होंने कोई एग्जिबिट नहीं किया। माय कंटेंशन इज कि सर मुझे उसको अगर रिपेयर करने में अगर देरी भी हुई है, तो जस्ट बिकॉज कि मैंने रिपेयर नहीं किया, वो जाकर के उसके नीचे जाकर के झूल जाए, तो दैट इज समथिंग लॉट। कोई रस्सी कपड़ा उठाने की रस्सी तो है नहीं, कोई जाके झूल जाएगा सर। वो कई बार कंप्लेंट ठीक है यार, आप अरे भाई तो कंप्लेंट किया था, तो उसको जाकर के मैंने नहीं बनाया, तो आप जाकर के तो सुसाइड नहीं करेंगे ना। नहीं, मैं सुसाइड करने नहीं गया था, काम चल रहा था। अरे आप लोग आपस में बात मत करिए भाई, आप लोग आपस में बात मत करिए। बताइए, आपने शिकायत कहाँ पे की है? लॉर्डशिप में काइंडली कंसीडर वन मोर थिंग, ही इज अपीयरिंग फॉर रामाधार साहू। एटलीस्ट जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी कर दीजिए, उनका घर बन रहा था। नहीं, अब जो है वैसे ही जान दो, उनसे मिलेगा ही नहीं पैसा गरीब को। कितना जमा करते हैं? 50% जमा करवा दिए थे आप वो? इनफैक्ट स्टे ऑर्डर यही बोल के मिला था मेरे को, आप फर्स्ट सेकंड ऑर्डर शीट देखेंगे, दैट टाइम द रोस्टर वाज विद डिवीजन बेंच, तो ऑनरेबल कोर्ट वाज कन्विंस्ड विद माय आर्गुमेंट की सेंटरिंग के लिए वहां चढ़ करके आपने ये किया। चलो ठीक है, जाने दो, उनका था, हमारा नहीं है सभी। हमारा तो ऐसा है कि आप दे दो, फुर्सत पाओ। बट आई वोंट बी एबल टू कंसीड ऑर्डर कर दीजिए। किसी की डेथ हुई है भाई, क्या सर्वाइव कैसे करेंगे? गरीब लोग हैं, इनसे मिलेगा नहीं पैसा, और इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। मिलो क्या है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंट्रोड्यूस करने का है इन फॉर डिलीवरी ऑफ जस्टिस सिस्टम, तो जो इमोशन है, सिंपैथी है, ये उसमें कहाँ से आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? मिलो
and we are human being. We are affected by emotions, griefs, sorrows. We have to take care of all these things. Otherwise, we will become machine. कि बिल्कुल strict अगर straight jacket formula, we have to follow straight jacket formula, then it would not be justice. लिखिए मिस्टर राजा शर्मा for defendant number 1 and 2. नहीं, डिपेंडेंट नंबर 2। defendant number 2, तो अपील में इसमें तो 2 लोग आ गए आपके, एक की जगह में 2 कैसे हो गए? मतलब डिपेंडेंट नंबर 4 भी जो है, नहीं आप ही हैं? नहीं, एक मिनट लगे, ये छत्तीसगढ़ जो राज्य लिखा है आपने 2-4 लिखा है यहाँ पे फॉर डिफेंड नंबर 2 and 4. यस लगे, Appellants. वो भी विद्युत मंडल है। Appellant / defend number 2, defend number 2 to 4. Mr. Ajay Sharma for respond number. Ajay Mishra, sorry, Ajay Mishra for respond number 3. डिफेंडेंट नंबर 3। Defend number 3. आप किसके लिए मिस्टर श्रीवास्तव? क्लेमेंट्स के लिए हैं? क्लेमेंट्स के लिए हैं? यस लगे, Mr. Arvind Srivastava for claimants. Mr. Pranjal Shukla, penal lawyer for defendant number 1/state. The defendant number 1 and 2 and 4 have challenged the judgment and decree passed by the 4th Additional District Judge Bilaspur, passed in civil suit number 65B/2015, dated 28 फरवरी 2017, whereby the learned trial court पार्टली किए हैं, नहीं, फर्स्ट प्राइमरी बटन अपॉन decreed the suit and यदि एक चीज पर ये तो जॉइंटली एंड सेवरली तो है ही है वो। फर्स्ट लायबिलिटी मेरा किया है, पेज नंबर 68 और खाली एक चीज जो छोटी प्रतिवादीगण से संयुक्तता माय लॉर्ड, और पार्टली डिक्रीड लिखना ना, संयुक्तता तथा पृथक पृथक रूप से प्रथम दायित्व प्रतिवादी क्रमांक 2 पर है, तो आप इनके अगेंस्ट में रिकवरी लगा दो, वो तो आप कर ही सकते हो। बार्ड बाय लिमिटेशन, अब आप जानो। इसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट नहीं दिया गया, आपका तो कोई काउंटर क्लेम है ही नहीं। जैसा चल रहा क्रॉस अपील फाइल किया आपने? नहीं तो फिर कैसे होगा? अपनी मोटर एक्सीडेंट ये चल रहा है कि पूरा एक्सीडेंट जो नहीं ठीक है, वो कर दिया जाए। ये फेटल एक्सीडेंट का होगा, फेटल में जाता है ये। अभी एक फेटल के अगेंस्ट में हमारे यहाँ आया था एक सिविल रिवीजन, इसमें बहुत बहस हुई, एमाइकस भी अपॉइंट किए, सिविल रिवीजन मेंटेनेबल होगा कि नहीं होगा। हमारे हिसाब से हम बोले फर्स्ट अपील ही जाएगा, वो बोले नहीं साहब इसमें तो फेटल एक्सीडेंट्स क्लेम जो है एक्ट है 1885 का है कि 84 का है, तो बोले उसमें देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिवीजन ऑफ अपील, देयरफॉर सिविल रिवीजन वुड लाई। ही साइटेड वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेयर इट वाज हेल्ड दैट where there is no provision of appeal or revision, then a revision would lie. So after hearing the parties and amicus curiae, Mr. Privy Council के हैं, and it was followed in the year 2000, 1967 or 1965 by the Supreme Court, and again in the year 2017 or 18. तो ये था इशू में बोला जो जनरली है हमारे यहाँ, तो हमने भी किया है तो फर्स्ट अपील ही फाइल किया था, और आते भी हैं तो फर्स्ट अपील ही आते हैं, सिविल रिवीजन तो कभी नहीं आए। बेसिकली दिस इज अ केस अंडर टॉर्ट्स, तो टॉर्ट्स में तो डिग्री होगा वो 96 में अप्लीलेबल हो। नहीं, उनका कंटेंशन था कि नहीं ये सिविल रिवीजन ही लाई होगा, तो हम बोले नहीं होगा, तो डिसमिस किया उनका सिविल रिवीजन, उनको लिबर्टी दिए कि फर्स्ट अपील फाइल करो आप। क्या लिखे? नहीं अभी क्या लिखा? partly decreed the suit and directed the and passed award of rupees 678,000 against the defendants jointly and severally, but first liability was imposed on defendant number 2, electricity department. The plaintiff are parents of
किसकी डेथ हुई थी? देयर सन। कौन है प्लेंटिफ? कौन है? प्लेंटिफ्स आर पेरेंट्स माय लॉर्ड। वही तो हम बोल दिखा रहे हैं, माय लॉर्ड। पेरेंट्स स्टॉप, पेरेंट्स ऑफ दूरदेशी साहू उर्फ राजेश। दूरदेशी साहू एलियास राजेश. Late Durdesi Sahu Elias Rajesh was working as a laborer in under a contractor. My lord. Under a contractor. Contractor working at the house of Ramadhar Sahu. Working at the house of Ramadhar Sahu. Defendant number 3. Where civil construction work was going on. इसमें आप लिखा है ऑन द फेटफुल डेट, दैट इज कौन सा तारीख की घटना है? 29/12/2007. He was engaged by a contractor Santosh Yadav for accomplishing sanitary job for at house of Ramadhar Sahu. It is pleaded that that high tension transmission line was swinging just above, किसके ऊपर? Just above The house. the roof. My lord. Roof of the house. रूफ तो बन रहा था, सेंटरिंग कर रहे थे अच्छा. रूफ के लिए. Just above the house, as it was loose. It is also pleaded that several complaints were made by the local residents and owner of house with the electricity department, but no action was taken. On the date of accident, the deceased due to mistake. Deceased came in the contact with high tension transmission line and got electrocuted and died on the spot. The plaintiffs further pleaded that the deceased was a skilled laborer, and he was earning कितना? 200 rupees. 200 rupees per day. And at the time of his death, his age was 24 years. 24 years. And thus they claim compensation to the tune of rupees 10 lakh. आपने जवाब पेश किया था. My lord. The defendant number 2 and 4 filed their written statement and denied plaintiff arguments. They pleaded that उसमें और भी ऊपर में लिख देना. The matter was informed to the police station Tar Bahar and Marg number 57/7 was registered on 29/12/2007 itself. The statements of the witnesses were recorded and postmortem भी हुआ था. My lord. And after On 30/12/2007. autopsy, dead body was handed over to the family members of the deceased. हमारा WS पेज 15 और 16 में देखेंगे, हमने कंप्लेंट हुआ था उस लूज फायर का, उसको भी डिनाई किया है, अपनी लाइबिलिटी डिनाई की है, और लिमिटेशन का भी हमने ग्राउंड लिया है कि फेटल एक्सीडेंट एक्ट में 2 साल का लिमिटेशन है, तो इसकी वजह से इट वाज बार्ड बाय टाइम. बट इन अनदर केस इफ माय लॉर्ड रिमेंबर्ड, तो डिवीजन बेंच ने लिमिटेशन के इशू को कर दिया है कि दैट विल नॉट अप्लाई. The written statement and pleaded that denied the plaintiff arguments and pleaded that no complaint was made either by the local residents or owner of the house with regard to line transmission line, high tension transmission line. It is further pleaded that the deceased himself was negligent and he came to the contact with the high tension wire. It is also pleaded that
that the suit filed by the plaintiffs was barred by limitation as it was filed after expiry of period of 2 years, whereas the limitation as per Fatal Accidents Act is 2 years from date of accident. Next. आप लोगों ने जवाब पेश किया था नहीं किया था? That is on page number 18. The defendant number 3 also filed written statement. आपने क्या किया, क्या बोला? Noted the same thing is many occasions we had made a complaint to the It stated that complaints were made to the electricity department to prepare the fix the line high tension transmission wire, but no steps were taken. It is also pleaded that the electricity department was negligent, and on account of their negligence, the deceased met with an accident. The learned trial court framed issues and held that the deceased came to the contact with the high tension transmission line on 29/12/2007 at about 11:50 hours and succumbed to death. It is further held that the suit is that the defendant number 2 and 4 failed to prove the fact that the suit was barred by limitation. Suit is barred by limitation. The ट्रायल कोर्ट हेल्ड की वो पहले उन्होंने लोक अदालत में लगाया था, तो उससे उन्होंने लिमिटेशन कंटिन्यूअस गिना और बोला कि विद इन लिमिटेशन. the learned trial court held that earlier an application was moved before परमानेंट लोक अदालत. permanent log adalat for grant of compensation. वो क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, मतलब उस पे फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ, तो ये केस पे and no final order was passed in that application, and thereafter suit was filed, and thus the suit filed by the plaintiffs was within limitation. The learned trial court passed award as mentioned in the opening para. Mr. Raja Sharma, counsel appearing for the defendant number 2 and 4, would submit that the suit filed by the plaintiffs was barred by limitation. Semicolon. The deceased himself was negligent. He came to contact with the line high tension wire. Semicolon. No complaint was made either by local residents or defendant number 3 before the electricity department, and no such document has been placed on record. He would submit that the learned trial court committed error of law in passing award against the defendant number 2, passing liability first on electricity department. He would submit that the judgment and decree passed by the learned trial court is liable to be set aside. On the other hand, learned counsel appearing for the claimants would oppose. Mr. Srivastava would submit that as per the plaintiff governments and the evidence of the party, evidence of plaintiffs and defendant number 3, it is quite vivid that various complaints were made to the electricity department with regard to line, LYING, line high tension wire just above the house of the defendant number 3. He would submit that the deceased came to the contact with the line wire accidentally, and he would also contend that there was negligence on the part of the electricity department. He would further contend that the learned trial court, after appreciating oral and documentary evidence, has passed well-reasoned judgment. Mr. Ajay Misra, counsel appearing for defendant number 3, would support the contention made by Mr. Srivastava. Next.
Mr. Pranjal Shukla, The judgment holds him liable if he supports the plaintiff, then it will go against. ये तो सपोर्ट ही कर रहे हैं, आप करते रहना. वो Mr. Ajay Misra would oppose the submissions made by Mr. Raja Sharma. ऐसा लिख दो. Mr. Pranjal Shukla, counsel appearing for the state, would support the judgment passed by the learned trial. So question for consideration questions कर देना R as under whether the learned trial court justified in holding that the defendant number 2 and 4 were negligent in not maintaining the high tension transmission line properly. Number 2, whether the learned trial court justified in passing award of such and such against the defendant number 2 by passing the first liability on defendant number 2. Next. Admittedly, the deceased was working under a contractor namely Santosh Yadav. On the fateful date, that is 29/12 ना, 29/12/2007, he was deployed by contractor at the house of defendant number 3 Ramadhar Sahu for fixing centering for roof. Accidentally, the deceased came to the contractor with the high tension wire and got electrocuted and succumbed to death. As narrated by the plaintiffs, defendant number 3, in their pleadings, that high tension wire was lying just above the house of the defendant number 3. It is also stated that various complaints were made with the electricity department, but no action was taken. PW1 next. PW1, Dayaram Sahu, father of the deceased, has repeated the contents of plaint in affidavit filed under order 18 rule 4 of CPC. In cross-examination, this witness has stated that the high tension electricity wire was lying about 20 feet from ground. He has admitted that if his son would have over the ground, he had not suffered any injury. He had not been suffered any injury. He has also admitted that the complaints, as stated in the plaint, copy of the complaints made to the electricity department as pleaded in the plaint, have not been placed on record. He has also admitted the fact that the civil suit was filed after lapse of 4 years. He clarified that earlier an application was moved on 29/12/2008 before permanent lok adalat and same was withdrawn on 20/12/2011. He stated that his son was earning rupees 200 per day. The plaintiff exhibited notice exhibit P1, P4 आ गया डायरेक्ट नोटिस. अच्छा, exhibit P1, an application moved before the permanent lok adalat. Notice is P3. Exhibit P2, postal receipt. Exhibit P3, legal notice under section 80 of CPC dated 30/8/2008.
Exhibit P4, reply to the notice dated 15/12/2008, Exhibit P5 मर्ग नहीं है, पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम, Exhibit P5 पोस्टमार्टम रिपोर्ट 30/12/7 and Exhibit P6 merge intimation. Next, the defendant examined Mr. C.M. Bajpayee, assistant engineer of the department, who stated on affidavit that notice was received, a legal notice was received by the department, by the department. He, in para 4, he stated that the 33 kV high tension transmission line was 5 feet away. क्या लिखा है? अबव नहीं, समानांतर दूरी पे लिखा है, एबो नहीं लिखा है आपने। समानांतर पैरेलल, समानांतर मतलब ये घर की बाउंड्री है 5 फीट आगे और 20 फीट ऊपर। नहीं 20 फुट नहीं लिखा है, पढ़िए आप। क्रॉस में देखिए नहीं क्रॉस में क्या, आपने एफिडेविट में क्या बोला है? माय लॉर्ड, एफिडेविट में जो बोला है उसको, हाँ उसको मैं पढ़ता हूँ। पैरा 4 पढ़िए। माय लॉर्ड 8 फीट की समानांतर हाँ समानांतर लिखा है, वो तो लिखा नहीं है। यस लॉर्डशिप। फिर it was parallel but 5 feet away from house of Ramadhar Sahu. इसमें भी सिर्फ 5 फीट ही दिखा रहा है। दैट इज ऑन पेज नंबर 56। 5 फीट जो है के बाउंड्री से दूरी है, मैप में भी देखिए। पर हाइट जो है 20 फीट नहीं था ना नीचे से। मतलब लॉर्डशिप में काइंडली टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फैक्ट जो 33 केवी का जो हाइट होता है वो 20 फीट है। दैट्स अ अरे स्टैंडर्ड भाई ऑफ लटक रहा था ना, लूज था, वही तो इनका एलिगेशन है। दैट्स अ In cross examination, this witness has admitted the fact that the maintenance of the transmission line was liability of the company. He further admitted the fact that in the year 2010, he visited the place of accident for inspection. Yes, BW2 Tijaram Yadav was a laborer working along with the deceased. This witness has stated that the height of high tension electricity line was 20 feet above from the ground. This witness has also stated that complaints were made to the department, but no steps were taken. He has also stated that that there was gap of 3-4 feet between the deceased and the high tension transmission line. He stated that the accident occurred on account of negligence on the part of the electricity department. From perusal of the evidence led by the parties,
and the pleadings made in the plant, it is apparent that the on the fateful day the deceased was working as a skilled labor at the house of defendant number 3. Stop. From evidence of DW2, it is also clear that the distance between the deceased and the high tension wire was about 3-4 feet. 13-14 फीट 3-4 है, My lord, मैं काइंडली पेरूज दी पैरा 13 उसी को तो पढ़ के लिखा है, तीज राम वाले देखिए नोटशिप, उसी को तो देख के लिखाए हैं। देखिए पैरा 13 13-14 फीट ऊपर था। पैरा 13 में ऊपर से चौथा लाइन, जो तार था वह जमीन से 13-14 फीट ऊपर था। जो उसको वहां पे थोड़ी बताया है, वो इसमें बताया है, ये उसमें आई आप तीज राम के में, तीज राम पैरा 14 में जिस छत पर बीच में आई है, जिस छत पर परदेशु साहू काम कर रहा था, बिजली की तार उससे लगभग 3-4 फीट की ऊंचाई पर थी, तो वही तो लिखा रहे हैं हम। हाँ, छत से 4 फीट ऊपर, वही तो लिखा रहे हैं। Whereas its height, the height of the transmission line should have been, कितना होना चाहिए जमीन से? 20 फीट, about 20 feet. It appears that it was lying just over the roof house of the defendant number 3. अगर 10 फीट में अगर पहली मंजिल होगी और 5 फीट और गिने तो इसने अप्रोक्सीमेट बताया, तो 15 फीट तो ऐसे ही हो जाता है जमीन। वो तो वहां बताना आगे में। And the deceased came to the contact with the lying wire. Though the complaints made to the electricity department by the local residents, and defendant number 3 have not been placed on record, but it can't be presumed that no such complaint was made. No such complaints were made. The DW1 assistant engineer of the electricity department visited the place of accident in the year 2010 after 3 years, whereas he should have visited the place immediately for inspection. नहीं, उनका ये कहना है कि वो पहली बार 10 में गए हैं, पढ़िए। 2010 तक के वो तोरवा में प्रदस्त थे। नहीं, जहाँ पे भी थे 2010 से पहले कौन गया है? हाँ, कोई नहीं गया है। तो फिर वही तो हम लिखा रहे हैं। लॉर्डशिप नहीं, एक्चुअली इनके ऊपर वो ना क्या है ना शर्मा जी, आपको 2 बार 3 बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, हम एक बार में ही देख लेते हैं क्या लिखा है। मतलब इनके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना आ जाए कि नहीं, कुछ लाइबिलिटी काहे आएगी, उनको तो एविडेंस लिखा रहे हैं, वैसे कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। क्या लिखे? Immediately after the accident. The map, क्या exhibit? Exhibit lordship D2. Exhibit D2 would show that there was gap of 5 feet. कितना लिखा है? 5 feet horizontal distance. 5 feet horizontal distance between the house of the plaintiff, defendant number 3, and high power transmission line, meaning thereby the high tension wire was lying just above the house of, or just beside the house of the defendant number 3. Therefore, the learned trial court rightly recorded a finding that the defendant number 2 and 4 were negligent with regard to proper maintenance of high tension transmission line. Next, with regard to amount of compensation, the deceased was aged about 24 years. He was earning rupees 200, and the plaintiffs are dependent. Therefore, the learned trial court rightly assessed the dependency and also awarded appropriate amount on other heads. Take into consideration, yes, next, with regard to the limitation, issue of limitation raised by Mr. Sharma, earlier the plaintiffs had moved an application under before the permanent Lok Adalat, and same was on such and such date, which was withdrawn on such and such date, and thereafter they filed
they filed civil suit on such and such day. As the matter remained pending before the permanent Lok Adalat, therefore, the plaintiffs would get benefit of section 14 of the Limitation Act, though it is not observed by discussed by the learned trial court, even though it can't be held that the suit was barred by limitation. Taking into consideration the above stated facts, I do not find any good ground to interfere with the judgment and decree passed by the learned trial court. This appeal fails and hereby dismissed. Lord, Interim order granted any is hereby vacated. I am appearing with my colleague Mr. Krishna Sharma. Mr. Krishna Sharma. Sharma, Mr. Raja Sharma along with Mr. Krishna Sharma for appellant. बाकी सब लिखो. Hi.